July students, tene isang hala ngatay diak Wednesday class in pinhala, wherein we talk about crop rotation. Tene diring video chunj kurte on mixed cropping. So mixed cropping is a farming practice of sowing 2 or 3 crops together on the same land. So mixed cropping is a very old cropping formula against crop failure due to abnormal weather conditions. So mixed cropping zena ngatai same jingjika crop ngis sang manga particularly 2 or 3 to crop ngis yang sum ngatai chore tapjes hala te ngatai zela no mixed cropping. And mixed cropping po ngatai te ngan le fala practice training stanok te zane chi fe chot kyak zana weather conditions gunma abnormal yot kyak to te vekane crop failure but crop failure chami chuk jese fe kone crop khachik tap snad kyak so that crop nis suppose sum tap na then nis po weather tolerate ma cha metkan chanang chik chik po at least lu shu khala so te sambhav nyam po tabat kyak. Now, crops are chosen in mixed cropping in a way that no crop competes. Ta ina nga mixed cropping na crop sumji ngis sum tap chok pala jing chichika. But nga tayo suk shatap ches ki crop nga tayo sum tabat na for example, te sum ka light, nutrient, water, te tsang में फिर competition को ना yung को समान खोला. ते योजना का तो फिर हमारा जो purpose है वो पूरा नहीं होगा. The main focus of mixed cropping is to get produced from at least one crop. The main purpose for mixed cropping gani iuno ki crop sum ngata ita badna at least te sum benang ne chik chik pe gani ngata ka nimeti yield hoben. If one crop fails due to shortage of nutrients, heavy rainfall, hala suppose ngata nutrient kami songte ya charpa mangpo tangste ya drought songte crop chik po fail chano chik po talu sano pala so ote fe risk metkan chuche se fe ngatai we actually go for mixed cropping. Now the crops are selected for mixed cropping on the following criteria. Tangda mixed cropping na crop nis ya sum at a time sakya chika ngatai grow chuches po zala no tangda crop nis ya sum choose chodna then chalak chirik what are the different features you have to keep in mind while selecting the crops for mixed cropping. So number 1 growth habit nga ta chi spera likna na boro sano mixed cropping zane kazu crops nga ta select jo sano first for growth habit each crop suppose crop sum nga ta choose chotna crop sum ka alag alag height pe grow karna chahiye so that there will be no competition for light. Then choosing crops in a way that one require a lot of sunlight, other should be using less. For example, crop sum choose chotna one should grow very tall, the other should be a climber, then the last one should be a creeper. Hala so ni sum ke canopy so rajik ma tall tree rak ko vese ang chang ni me problem chis mano nispa wo kwe ka tilt grow chakan rak so उसको भी कोई इशू नहीं होगा. एंड द लास्ट वन सपोज क्रीपर जिंगा दाई जो ना सो इन तीनों का कैनोपी अलग अलग हाइट रखपा सो दैट मीन्स ते वजह से फिर सनलाइट का कोई इशू नहीं होगा. देयर विल बी नो कंपटीशन फॉर सनलाइट. सो ते फेंगा था जरा नो कि जब हम क्रॉप मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए क्रॉप चूज करते हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट दैट शुड नॉट compete for sunlight. Thereby we should choose plants of different growth habits. Then as well root pattern. Yani even when I crop rotation in the spin, if one crop is deep rooted, the other should be shallow rooted. Mata plant nis choose chodna ya sum chodna. Sum ka deep rooted hodna ya sum ka shallow rooted hodna. Then ekhone root pits ek to number 1 sakya देते ना लेवल बना पटाख लूस पसंग न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन बढ़ेगा. निस्पा वो वाटर रे जुपांग छचिस नो खला ते इफेंग आता अलग अलग आता प्लांट चिचिक पोडी रूटेड उतना कोई कोई न्यूट्रिएंट ना वाटर थिल लेकिन जो प्लांट चिचिक शैलो रूटेड उतना
ketok na ninjuk so te vijas te nga da nutrient via competition bang kam chajisano. If one, okay, then third is water need. Spela sumpa nga tay chi nang na bosches. If one requires more than the other, देखो, if one requires more, then the other should require less. So chikpa plant ngis nga tay jing chi ka grow chot na. Then chikpa crop ngis grow chot na. Crop chikpa chu kam gos. Hala, yang crop chikpa chu mang pogos kan yung gos. So tevi just think nga competition me kan chano. For example, if there are heavy rains, then one will survive. And the same applies during drought condition. Chikpa chu pat kam gos kan yun na. Chikpa chu mang pogos kan yun na. Hala, suppose charpa mang po tang na. Chu mang po yut kan gos kan bolu sanok. Baki chu nyun gos kan bo. They heavy rain na met kan chanok. So at least nga na crop chikpa top. Tanya sa pari drought chana. Hala, charpa mane mata sukha yung na. Tanya ka plant po water mang nyun ka survive chat. Teo survive chanok. Water mang po gos kan bo. Tanya met kan chanok. So that means it we can say that water requirement ang so yut na the water competition bhi nahi hoga. Then crop duration yang spela chichik nga tanchi nang na boro sanok while selecting the crops for crop mixed cropping, crop duration bo the mix of crops with a short duration and a long duration chichik po gyospa yield tangkan mature chakan chichik goht mature chakan hala, so that harvesting जो है उनका अलग अलग हो, ठीक है. And then you should remember का उंगा था गोस्पा harvest चुat त्यो harvest चुसा के उंगा था sting मा harvest sting ने mature शकने plant पे का effect छाओ समनो. So that means जब आप mixed cropping के लिए crop choose करते हो, you should keep in mind that both the crops, suppose crop मीन्स ना जिंग चिची का था बात ना, एक crop जो है वो जल्दी mature होना चाहिए, दूसरा थोड़ा देर से mature होना चाहिए, ठीक है. This thing is demand on nutrient. A balance of nutrient availability is maintained. So that means another thing is one, the crop choose chokan be, they should have a different requirement of nutrient. One crop should require less, others should the others require the more. So इस तरह का जो nutrient का demand है वो भी vary करना चाहिए while choosing the crops for mixed cropping. Then benefits ta mixed cropping जो से ची फायदा होता क्या है. Number one, variety of produce. Most of this ta ची फायदा होता क्या हम संगलना. Yes, क्योंकि आप 2 या 3 crops को उगा रहे हो तो obviously आपको produce भी last end product भी आपको अलग अलग मिलेगा, variety मिलेगा. Most of the small farmers practice mixed cropping. Depending on their family needs, the crops are grown. ठीक है, मानचा small farmer गुने जो mixed cropping बो and कोलों ने family need हिसाब से हला the single crop can't suffice their family needs. So जैसे एक family नंगा farmer जिक का उन्हें subsistence farming चोटो यानी रंग बोस farming चोट ना तेनिकते जाने कोने family needs कुन पूरा चुचे सिफिया they go for mixed cropping. क्योंकि फैमिली जी ना सिर्फ क्रॉप चाहिए तो नहीं हमारे पास, तो एक फैमिली को क्रॉप में पल्सेस भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, सीरियल्स भी चाहिए, सो दे कैन ग्रो पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एट अ टाइम एट वन फील्ड, ठीक है. सो दैट मीन्स कि मिक्स क्रॉपिंग जो जैसे फ़ायदा होनो कि ngata वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस तो होनो निस्पाओ लेस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर. स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया आर मोर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेन्स, ठीक है, बट समटाइम मॉनसून कैन बी हैवी एंड समटाइम्स नन. छरपो हमेशा यूनिफॉर्म जिकता हम कभी छरपो मंगपो दानो कभी यूं दानो. इफ अ फार्मर इज डिपेंडेंट ऑन द सिंगल क्रॉप विच इज वाटर इंटेंसिव सॉरी है ता सपोज फार्मर जिक सिर्फ सिंगल क्रॉप ग्रो चूस क्या ते वो अच्छु पगोस का नहीं करते क्रॉप को एंड छरपा मातांग क्या तो क्या होगा. छरपा मातांग चेस पे जैसे क्योंकि मॉनसून का डिपेंडेंट नहीं होगा फार्मिंग वो हला. अब छरपा मातांग स्पा then whole produce is lost. फार्मर को कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन मिक्स क्रॉपिंग चोस पिना कोई कना कोई वाटर इंटेंसिव नंग वाटर कम उसका ने प्लान निस तप्स पिना का तो इवन छरपा मातांग ना एटलीस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप में कन छानो बट दूसरा वाला तो रहेगा तो रिस्क बहुत कम है ना. एटलीस्ट वन क्रॉप विल गिव द यील्ड. तो द क्रॉप फेलियर जैसे रिस्क पो मा न्यून होनो व्हेन वी गो फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है.
Then it improves soil fertility. The crops are chosen in a way that at least one is leguminous. The legume crops fix the nitrogen in the soil. Then अगर यहाँ चीज़ जब हम मिक्स क्रॉपिंग के लिए जाते हैं तो ngati तेनाने क्रॉप चिक चिक पो leguminous योतना मा फायदा नोला अच्छा इउंगे अनंग ओके तो one crop should be leguminous तांगी जे पता है नोक leguminous का वजह का plants कुन nitrogen fix chungena thala kaun biological nitrogen fixers in so that's of plant chik maning po grow chuches so non leguminous पे yes soil and nutrient kan unke consume chano but legume पे nitrogen fix chano है ना तो mixed cropping एक तो ये फायदा हुआ ठीक है कि ngata अगर ngata ये mixed cropping जने leguminous चिंग non leguminous चिंग po grow chona tene leguminous will fix nitrogen in the soil and non leguminous will consume तो सॉइल का न्यूट्रिएंट जो है वो कंपनसेट हो जाएगा ठीक है यंग चिचिक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट ओके यंग चिचिक आता मिक्स्ड क्रॉप जो अच्छी पुने तो जब मिक्स्ड क्रॉपिंग की डिकम्पोजिशन होती है तंगा था क्रॉप नांग ये सुम ताप्श क्या करते हैं ते उन येलोमा नंग स्टेम बुते या कोने लास्ट स्टम्प प्लस का नून डिकम्पोज चाची पुने इट विल एड अप nutrient in the soil so that means it is a win-win situation for the farmers. Weed control when there are crops of different canopy ngal lazis kan sola है ना आता है plant खचिक tree खचिक herbs shrubs योतना तो उतने वजह से the amount of sunlight reaching the ground is reduced थिल बिका तने ground लेका sunlight मा नून जो ने पहुँच मन खला when there is no sunlight या very less sunlight weeds won't germinate indirectly it's less labor intensive तो weed control हम इना तो जब हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं तो वीट जहाँ कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है का वजह से ngata तने डिवीडिंग जो चीज़ से लास्ट पोंग ngata कम जानो है ना तो वीट कंट्रोल हो जाता है बिकॉज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग and because of the different canopy of plants which are growing on the same field and उसकी वजह से नीमा properly ground निगमा पोपा weeds कुन germinate छातो मनो pest control. Mixed cropping obviously reduces pest infestation. Each pest is attracted to individual crop. If the crop are mixed, you can expect helpful insects too. Hala, tanya ngata even mixed cropping cho achik pune ngata zumu mang pujiang shkyop sanok tebe kane. Dekho, ngata mixed cropping tha achik pune teka insects mang pujiang tanya crop na ngi sum taps tanya tebe ka insects mang pujiang grow chano hala. ते insects नंग birds मंग पोजी तांगा था mixed cropping जो obviously insects का population भी वहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि हमने variety of crops उगाया है तो उन पे dependent insects उन पे dependent birds मंग पोयानो ते insects नंग birds मंग पोयानो चिपुने खोरंग में नंग pest चुनचान नून control है ना लूसानो हाला so thereby mixed cropping plays a very important role in controlling the pest. Then increase in yield. Crops are carefully chosen in order to help each other. ठीक है तंगा तायंग crop उन इसुक शे choose चुन कि they will help one another हाँ the symbiotic relationship. For an example, if a leguminous crop for an example of leguminous crop which support climbers, there is always a higher yield when you compare on monoculture. So ngata है when you know go for mixed cropping तो ngata tontok ngata ना खचिक ताबा नो पता हला ना खचिक ताबा चिक पुने अगर हमने ngata इंगल नजर kan सोक्सला leguminous नंग नॉन leguminous शिक ताबा ना तो क्या होगा leguminous plant जो है वो soil में nitrogen fix करेगा तो ते वजह से non leguminous plant जो है उसको nitrogen availability अच्छा मिलेगा ते वजह से crop yield गया लायों शचन हला तेना सोक्सला even climbers रियोत ना तेनी climbers ला ngata ये plant ना ngi stop ना जे tree yang जे climber तो climbers उनला support ang ठीक ठाक तो पर yield आपका अच्छा रहेगा so I mean when compared to monocultures in so this is mixed cropping is polyculture actually monocultures na ngata ये का ना चिक के plant ता बदना monoculture ता ngata ना ngi से sum ता बदना that is polyculture so polyculture ना yield बुमा गया लायों as compared to monoculture ठीक है okay successful mixed cropping examples जैसे ngata का farmers गुने जोस तेमा successful सोंग ते तेसो example खचे नो cotton नंग groundnut है ठीक है
या तेना सोचला कॉर्न बीन्स पम्पकिन म्यूनियो फार्मर्स को ने कॉर्न बीन्स पम्पकिन एक ही खेत पे उगाते हैं एंड दे फाउंड अ वेरी गुड रिजल्ट्स तेना सोचला वीट नंग मास्टर्ड हला बार्ली नंग इवन वीट नंग मास्टर्ड तो शायद ngata ila dakslang farmers khachige grow chono tene groundnut nang sunflower ठीक है then also la barley nang chickpea corn nang black gram so these are few examples of successful mixed cropping ठीक है and in ngata ilana first figure bana 6 rice field tene jung rubber plantation ठीक है then also la yung sa figure bana ngata ilana rice field है राइस है सो बीच बीच में शुगर केन है सो दैट मीन्स यू हैव various benefit of going for mixed cropping so yung yan po mixed cropping butsar video walang pok ngis ngan tong tene chitong doubt yot na ka to please tiasat है so इसके बाद I'll come with a short video on dryland farming